And now to Assam, where the crucial autumn session of the Legislative Assembly started on a fiery note. The government plans to bring a bill for compulsory government registration of Muslim marriages and divorces, opposed by the opposition parties in the state. They also questioned the tabling of the amendment to the Assam Land Revenues and Regulations Act. Ratnadeep Chaudhary reports. Day one of the Assam Assembly session saw the opposition taking on the government on several issues. The government plans to table and pass some key legislations, including a new legislation on the registration of Muslim marriages and divorce. देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। The opposition has hit out, claiming the government move is communal. मुसलमान मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 से चला रहा है, कोई वो नुकसान नहीं है। मुख्यमंत्री को चाहिए मुसलमान के डेवलपमेंट का काम करे। गवर्नमेंट ऑफ असम और चीफ मिनिस्टर, खास करके चीफ मिनिस्टर ने ये जो कम्युनल एक्ट लाने के लिए कोशिश कर रहा है, हम लोग इसका विरोध में हम लोग लड़ाई कर रहा हूँ, हम लोग कभी नहीं होने देंगे। तो ये कम्युनल एजेंडा है। The autumn session of the Assam Legislative Assembly is expected to be a stormy one, with the government planning to bring in a new legislation that will bring the Muslim marriage registration under the ambit of the government, and no more the Qazis can register Muslim marriages. It will be the government official who will register the marriages, and a section of the opposition parties are opposed to this idea. The government took the first step today. The bill to repeal the existing law has been tabled. The cabinet has approved Assam Compulsory Registration of Muslim Marriage and Divorce Bill 2024, mandating the Muslims to register marriages and divorces with the government. This will eliminate the role of Qazis. The opposition today also questioned the tabling of the amendment of Assam Land Revenue and Regulation Act. दुर्भाग्य है, आसाम के मुख्यमंत्री खुद लॉयर है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके एक लैंड बिल अमेंडमेंट बिल ला रहे थे, जहाँ लाके कि बरपेटा में, बटद्रवा में, माजुली में, फला जगह यहाँ मुसलमान ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। हमने स्पीकर से यही मांग किया था, आप इसको इंट्रोड्यूस मत कीजिए, आप इसको अलाउ मत कीजिए, लेकिन स्पीकर ने नहीं माना। हमने वॉकआउट किया है। One very important bill to protect land. We have decided, our government has decided to bring a law so that our indigenous people can save our lands. That is very important. Opposition are very, very unhappy, but obviously we are happy. Assamese people are happy. That's why we are bringing this bill. It will be passed. Once enacted, the new Muslim marriage and divorce law will make the registration of child marriages illegal. With camera person Nakul Rabha in Guwahati, Ratnadeep Chaudhary for NDTV.